नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम आपको इंटेलिजेंस लाते हैं, हेल्थ इंटेलिजेंस लाते हैं दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है। और वो हमारे लिए भी जानना जरूरी है, हमारे लोगों के लिए भी, हमारे सिटीजन्स को लिए लिए भी सिटीजन्स के लिए भी जानना जरूरी है क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और अभी महामारी के दौरान काफ़ी ड्रास्टिक मेजर्स लिए गए थे और सभी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स जिम्मेदार थे। और कुछ कुछ गवर्नमेंट तो बहुत ही डिक्टेटर जैसे सुलूक किया है लोगों के साथ। और सबसे एक गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा ये किया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन महामारी के दौरान, कनाडा कनाडा के गवर्नमेंट जो यंग प्राइम मिनिस्टर थे, ट्रूडो वूडो क्या नाम था, काफ़ी वो वैक्सीन मैंडेट्स और ज़बरदस्ती हार्श मेजर्स और मैंडेट। और अगर आपको याद है तो ट्रक वालों ने स्ट्राइक किया था, बहुत लाइन लग गई थी ट्रक वालों की, कनाडा में आने नहीं दे रहे थे बहुत। उन लोग जैसे फार्मर का मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ, ऐसे ट्रकर्स मूवमेंट हुआ था कनाडा में। अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस, जैसे न्यूटन लॉ है ना, एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसा कुछ है ये फिजिक्स का कुछ था, न्यूटन्स लॉ। अभी वो जो प्रेशर बिल्ड किया था, अभी वो प्रेशर कुकर फट रहा है और लोग खुल के बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाबदारी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। 7, 8, 9 सितंबर में शायद, हाँ ये इतनी तारीख में कनाडा में उन्होंने अपना आवाज पहुंचाने के लिए दावा किया है। एक वैक्सीन इंजर्ड, क्योंकि जबरदस्ती सबको दिया, यंग लोगों को भी दिया जिनको जरूरत भी नहीं था। वैक्सीन इंजर्ड वाला का एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बना है, क्योंकि अभी भी जो भी सरकारें ने इतने हार्श मेजर्स लगाए थे वो अभी भी मंजूर नहीं करते हैं कि वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव हुआ है कोविड 19 से, जबकि मरीज घूम रहे हैं दुष्प्रभाव वाले, इंजर्ड घूम रहे हैं। और वो आप बीती बता रहे हैं मरीज अभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कनाडा में ऑर्गेनाइज किया है। उनमें से पीड़ित लोग आके अपना फर्स्ट हैंड, बियॉन्ड द स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े तो छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े ये कि आंकड़े छुपाने के बाद जीते जागते जो कि जैसे भी जी रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन इंजर्ड से कुछ लोगों को इतना सीरियस दुष्प्रभाव हुए कि अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, कैरियर चेंज हो गया, होम बाउंड हो गए, बेड बाउंड हो गए। ऐसे ही हम आपको थोड़ा सा क्लिप बताते हैं उसी इससे, जो कनाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वैक्सीन से जो इंजर्ड एक लेडी, 46 ईयर ओल्ड की लेडी, जो कि डेंटिस्ट थी, बहुत जी ट्रैकिंग में जाती थी, बहुत एक्टिव रहती थी, उनको अपनी आप बीती बता रही है कि वैक्सीन लेने के बाद वो फर्स्ट इसके बाद ही रिएक्शन हुआ था, उसका हार्ट रेट बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था, फिर चॉइस नहीं था, बोला हमको कोई कंसेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई हमको लेना ही पड़ा। फिर दूसरा डोज के बाद वो बहुत ही बुरा हाल हो गया उसका, न्यूरोलॉजिकल ये हो गया, पैरालिसिस हो गया, सेंसेशंस चले गए, बैलेंस चला गया ब्रेन में कई जगह ये। और कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा हेल्थ सर्विसेज ने उसको इग्नोर किया, वो मान कबूल करने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन से इंजरी है, ना कोई कंपेंसेशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी चलो, अभी रूलिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वैक्सीन कंपेंसेशन नो लाइबिलिटी या कुछ, वही लीगल टर्म है, कम से कम माना है वैक्सीन इंजरी हो रहा है, कुछ कोर्ट केसेस में माने हैं, ये है। पर कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी हार्श है, तो उसने फिर उसको अमेरिका जाना पड़ा अपने ट्रीटमेंट के लिए, और उसको अपना प्रैक्टिस बेचना पड़ा, क्योंकि वो डेंटिस्ट है, खड़े होके काम करना, बैलेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और उसको $148,000 लग गया, ब्रेन सर्जरी कराना पड़ा। जैसे आपको मालूम है खून के धब्बे ब्रेन हेड में होते हैं, पर्टिकुलरली यंग लोगों में ज़्यादा हुए थे, एस्ट्राजेनेका वगैरह, जो कि विड्रॉ भी करना पड़ा कंपनी को, खून के धब्बे। तो 148,000 करोड़
जो $148,000 उसको ब्रेन सर्जरी में लगा, जो कि 1.5 करोड़ से थोड़ा कम, 1 करोड़ 40 लाख करीब खर्चा। सोचिए, 1 करोड़ ब्रेन, और अभी भी उसको प्रॉब्लम है ब्रेन में। तो आप उसका क्लिप सुनिएगा, क्योंकि हम उसी का क्लिप बता रहे हैं। हमने थोड़ा हिंदी में इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलती है और यही बोल रही है कि हमको ये, और हम इसीलिए उन्होंने एक वॉलेंट्री ग्रुप बनाया है वैक्सीन इंजेक्ट का, जो कि अभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करने वाले हैं, पब्लिक हियरिंग। अब देखो होता है कि नहीं कनाडा में, 7, 8, 9 सितंबर को। और हमारे यहाँ भी अवेकन इंडिया मूवमेंट इसमें बहुत काम कर रहा है। कई लिस्ट है उनके पास वैक्सीन इंजेक्ट के, क्योंकि जितने गवर्नमेंट्स है, पर्टिकुलरली कनाडा गवर्नमेंट वगैरह बहुत हार्श है। और अमेरिका में अभी सीनेट हियरिंग्स वगैरह हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स आके बोल रहे हैं। पर ऑफिशियल पोजीशन है सेफ एंड इफेक्टिव। अभी लैंसेट में 15 दिन पहले पेपर छपा है कि mRNA वैक्सीन सेफ है, बिलियंस ऑफ डोजेस लगा रहे हैं। जबकि कुछ कुछ कंट्री से आ रहे हैं कि साउथ कोरिया से डेटा आ रहे हैं, और भी कंट्री से। तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि लैंसेट वैंसेट ये बिके हुए जर्नल्स है, सब फार्मा कंपनी के कंट्रोल में है ये। पर आप बीती है, लोगों का फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जो पीड़ित है वही शायद लोगों को जानकारी पहुंचाएगा। आप उसको सुनिए, और खुद डॉक्टर है, डेंटल ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। तो आप उनको सुनिएगा और अपने आप सोचिएगा, और भी कुछ ऐसे लोग हैं। जब डेवलप्ड कंट्री में अगर ये हाल है, तो हमारे जैसे कंट्री में आवाज़ सुनने वाला कौन है इतने लोगों को। तो आप इनका To listen. If you believe you or someone you know has been affected, we encourage you to share your story. Whether you wish to testify publicly or simply submit your experience privately, we want to hear from you. Please visit theallisoninquiry.com and complete the submission form. Thank you very much for being with us today. We thank MP Dean Allison, Sean, and Teresa Buckley. I'll pass you those. Thank you. For their courage. And their leadership. My name is Michelle Wharton, and I am one of the thousands of Canadians who have experienced an adverse event following a COVID-19 vaccine. And I'm also one of the co-founders of CanRise 19, a scientific-based nonprofit organization founded to support injured Canadians. I was a thriving, vibrant healthcare professional, strong, healthy, and living my life to the fullest. For more than 20 years, I served my community. I built my own dental practice from the ground up and spent my personal time hiking and tour skiing in the mountains with my family. I had no pre-existing medical conditions. Everything changed in the late fall of 2021. My life, as I knew it, changed rapidly. My health vanished. I experienced an adverse reaction following the COVID-19 vaccine. Within 1 hour of my first dose, I experienced elevated heart rate, rapid fluctuations in heart rate and blood pressure, shortness of breath, tightness in my chest, and a general feeling of being unwell. Receiving these injections was not an action I took lightly, and sadly, true informed consent and bodily autonomy were not upheld, the very foundation of ethical practice. Within 48 hours of my second dose, I experienced a rapid and severe onset of neurological and systemic symptoms, including blurred, tunnel, and double vision, burning sensations in my legs, urinary incontinence, tinnitus,
dizziness, vertigo with rapid heart rate, blood pressure instability, chest tightness returning, and many additional symptoms that followed. My health declined significantly and has continued to deteriorate over time. Thank you. I now live with much uncertainty of my future. As a result of my vaccine injury, I was forced into medical retirement at just 46 years old. A career that I loved ended abruptly with no opportunity to choose when or how it would end. These conditions are dynamic, they're evolving, and they're not well understood. This journey ultimately led me to the United States in 2023 and again in 2024 in search of private medical care, specialized diagnostics, selling my dental practice, crowdfunding, and eventually brain surgery with a biopsy to relieve brain compression. $148,000 for the brain surgery alone. No one in Canada would help me. They would see the onset of my injury and reject the referrals. Since then, I've been diagnosed with numerous neurological and immune-mediated conditions, and it would take years of self-advocacy to be seen. These conditions continue to progress rapidly, as they do for many Canadians across this country, and without early recognition and medical care, the prognosis is poor. We are still living with the consequences of the past 6 years. The exhaustion, the division, the distress, the damage that never truly healed. There has been no acknowledgement, no meaningful support, no medical care where promised, no accountability. A society that refuses to learn from its past eventually relives what it failed to confront. I live with vision loss, nerve damage, loss of feelings throughout my face and my limbs, and ongoing white matter brain lesions. I experience difficulty maintaining upright position, balance impairment, and relentless neurological pain. Sharp electric shocks, burning sensations, zapping, pain, numbness occur every single minute of every single day for 5 years. Brain inflammation, all due to an immune response that has never resolved. Ongoing cystic masses in multiple organs, including my brain. I spend 90% of my life homebound, bedbound. No family should ever have to carry the burden after trusting and receiving a Health Canada approved medical product. We have been left behind. We've been disregarded. This injury stole my independence, my quality of life, time we can never get back, and replaced it with uncertainty and loss. My faith, God, and my family have carried me through. And today I'm still fighting to access healthcare in Canada. I'm still pleading for treatment. But my story is not unique. Today, I'm not here simply to share my story. I'm here on behalf of the vaccine-injured community at CanRise 19 and the countless Canadians suffering in silence. CanRise 19 provides peer support groups, scientific resources, advocacy, emotional support, literature, and a developing medical care fund, pending charitable status, to assist Canadians in accessing medical care where the government supports have failed. For years, stigma, dismissal, pain, and censorship left many of us feeling completely alone. My co-founder and I, Julie Woods, found one another
Through adversity, pain, isolation, censorship, and abandonment, CanRise 19 was founded. We hear the cries of the injured, and we would not be able to support injured Canadians with the help of our incredible volunteers. If you have experienced an adverse reaction, if you are bereaved, if you've lost a loved one, or if you're caring for someone who's suffering, please reach out. There is urgency. The cost cannot be measured only in terms of medical ailments. This injury robs you of the life you once dreamed of. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार